we are going to talk about supercomputers. So these are the computers which are called high performance computers. Kona na high performance computer. Basically, what is supercomputer? You have a computer. Let's suppose I will connect another 15 computers. So all together, all the 15 computers, when they will work parallelly. For example, गोटे तुमको कहला कि गोटे वीडियो प्रोसेसिंग कर, ठीक अछि. देन तुम जतले वीडियो प्रोसेसिंग करिया कहछ, देन जणो कहला कि भाई तू वीडियोटा पका, जणे सेथिरे ऑडियो मर्ज करिवो, जणे किछि सेथिरे टेक्स्ट मॉडिफाई करिवो, राइट. तो कथा होची जदि तुम एकुटिया करिवो, देन तुम कोन करिवो, आगो वीडियो करिवो, देन तापर ऑडियो प्रोसेसिंग करिवो, देन तुम किछि टेक्स्ट ऐड करिवो. तो मे भी तुमको 20 मिनिट लागि थांदा तीनटा काम वन बाय वन करिया पे. किंतु मु जदि कहबी पैरेलल प्रोसेसिंग चलियो, पैरेलल प्रोसेसिंग तुम कंप्यूटर रे तुम वीडियो करो, सेम सॉफ्टवेयर की यूज करिकी आउ जणे सेम प्रोजेक्ट रे पुनी से कोन करिवो ऑडियो पकै दबो, आउ जणे सेम टाइम रे टेक्स्ट किछि कन्वर्ट करके चेंज करके पकै दबो. देन एटलीस्ट 5 मिनिट रे जोठी गोटे प्रोसेस तुमको 5 मिनिट मिनिमम लागतांदा, तीनटा प्रोसेस को 15 मिनिट लागितांदा. एटलीस्ट 5 मिनिट रे तीनटा प्रोसेस कंप्लीट हेजो इफ यू विल ट्राई टू कनेक्ट 3 कंप्यूटर्स एट अ टाइम. इज दैट क्लियर? हाँ. तो बर्तमान जदि तुम देखिल कि basically supercomputer कौन ना, it is a high performance computer. That means what? Many computers that works parallelly. So they work on the concept called parallel computing. Very important. You have to understand the supercomputers, they are working based on what? Parallel computing. जेमती मु कहली वीडियो बनेबार अछि, जणे वीडियो पकेला आ जणे ऑडियो पकेला आ जणे किछि टेक्स्ट ऐड कला. सो पैरेलली तीन जण का साइमल्टेनियसली काम करछन्ती. दिस इज व्हाट वी कॉल parallel computing and they will make it supercomputer, wherein an array of processors stacked together to perform high computational work. Supercomputers can do minutes or hours what regular computers do in days, months or year. जोटी गोटे नॉर्मल कंप्यूटर गोटे गोटे वर्ष लगौतला सेतेले गोटे सुपर कंप्यूटर, बिकॉज से 40-50 टा कंप्यूटर कनेक्ट हेकी गोटे जगह रे थिबे, राइट. तो से माने कोन करिवे आराम से सेटा को कंप्लीट कर दे परिबे विद इन सम आवर्स, जोठी कि गोटे वर्ष लागुतला सेटा गोटे घंटा भितरे काम हो जिवो. ओके. नाउ कमिंग टू टाइप्स ऑफ सुपर कंप्यूटर. सुपर कंप्यूटर केते प्रकार? गोटे होची क्लस्टर कंप्यूटर, गोटे होची ग्रिड कंप्यूटिंग. सो व्हाट इज क्लस्टर कंप्यूटिंग? ए कंप्यूटर क्लस्टर इज ए लोकल नेटवर्क ऑफ टू और मोर होमोजेनियस क्लस्टर. ए कंप्यूटेशन प्रोसेस ऑन सच ए कंप्यूटर नेटवर्क क्लस्टर इज कॉल्ड द क्लस्टर कंप्यूटिंग. ओके. सो बर्तन तमरो गोटे घर अछि, से घर भितरे जदि तमे दीटा कंप्यूटर को मिसै कि रखिछ, राइट, मोर देन टू homogeneous computer. So in case of homogeneous means working in the same kind of work and in the same place. जदि तुम पाखरे ही अछि सब, राइट, बहुत डिस्टेंस रे नहीं, गोटिए जगह भीतर अछि, रूम भीतर ही दीटा कंप्यूटर अछि, देयर वी आर सेइंग एज homogeneous computer and working for the same work. Okay, then this is called computer cluster or cluster computing. That means मु कोन कहछि जदि मोर 100 टा कंप्यूटर अछि, बट सबु तक 100 टा कंप्यूटर को मु गोटिए जगह ही रखिछि एंड से माने काम करिया को स्टार्ट करले पैरेलली, that I am saying cluster computing. Is that clear? Okay. Next, grid computing. It can be defined as a network of, it can be homogeneous or heterogeneous computers working together over a long distance to perform tasks that would rather be difficult for a single machine. Grid computing, for example, this is one cluster, this is another cluster, this is another cluster. Let's suppose this cluster is in Bhubaneswar, this is in Cuttack and this is in Rourkela. Okay. But let's suppose एथिरे 10 टा कंप्यूटर अछि, एठी 10 टा कंप्यूटर अछि, एठी 10 टा कंप्यूटर अछि. सो 10 टा कंप्यूटर जदि अछि, एटा को मु गोटे क्लस्टर कहि परिबी. Correct? So this is Bhubaneswar cluster computing. This is Cuttack cluster computing. 10 टा कंप्यूटर से माने कनेक्टेड अछंती. राउरकेला रे एमाने 10 टा कंप्यूटर कनेक्टेड अछंती. Now I am saying जदि आंको भीतर भी मु कनेक्ट कर देबी. So this is what we called grid. Is that clear? Grid computing. Okay. So generally तमे देखिथो ना इलेक्ट्रिक लाइन रे भी ग्रिड कांसेप्ट थाए, राइट, कि गोटे इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई हुए, राइट, सेठी बहुत सारा टावर थाए, से माने कोन करंदी, ए माने गोटे काम करिवे, देन आ गोटे जगह रु से माने भी गोटे सेठी भी गोटे ग्रिड थिबो, सेठी से माने कोन करिवे, सेठु सिग्नल ट्रांसफर करिवे. तो ए भला सेठी जो इमती ग्रिड कहउचे, एठी हमें कहउचे कि जदि एगुडा को हमें कनेक्ट कर देले बिटवीन द क्लस्टर्स, दैट इज कंसीडर्ड टू बी grid computing. That means it is homogeneous at the simultaneously it is heterogeneous. This is only homogeneous, this is singularly homogeneous, similarly this is singularly homogeneous, but together they are heterogeneous because they are not operating in one particular location, rather than they are operating in more than one location, but they are operating simultaneously on the same work. Is that clear? Supercomputing, grid computing, grid computing. Okay. So in case of cluster computing, nodes must be homogeneous. They should have same type of hardware and operating system.
In case of grid computing, nodes may have different operating system and hardware. Machine can be homogeneous or heterogeneous. That means what? So when I'm saying homogeneous, in the same location, if I am having 10 machines, all machines should have a Windows software. If I am having out of 10, 8 are Windows, 2 are, let's suppose, Mac or Ubuntu or some other operating system, this is not homogeneous. Is that clear? Jadi same type of hardware and operating system which is software, jadi same type ର hardware and software ସବୁ machine ରେ ଅଛି, homogeneous. Same time ର hardware ଆଉ software ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ machine ରେ ନାହିଁ, then it is heterogeneous. Is that clear? Okay. Computers in a cluster are dedicated to the same work and perform no other tasks. केवल गोटे ही काम करेंगे. Computer in grid contribute their unused processing resource to grid computing network. Basically, let's suppose भाविनो एठी 10टा अछि, एठी 10टा अछि, एठी 10टा कंप्यूटर अछि. Let's suppose एई जो 10टा अछि grid computing रे एई 10टा homogeneous भी हे पारंती. That means homogeneous in the sense same location, correct? No, and all the 10 system will have same hardware and software. You know what is hardware and software, right? गोटे कंप्यूटर रा हार्डवेयर जो बाहर पार्ट गोटा, राइट, कि तार हार्डवेयर रे कोन तमे कहछो मदरबोर्ड वगैरह जहा हला सेतिर लेट सपोज 1 टीवी रो डाटा समस्त पाखरे अछि, दैट इज सेम हार्डवेयर, राइट. 1 टीवी रो डाटा, लेट सपोज इंटेल i5 समस्त यूज करछन, दोज आर हार्डवेयर. व्हाट इज सॉफ्टवेयर? कि लेट सपोज ऑपरेटिंग सिस्टम समस्त विंडोज ही अछंती, देन दैट इज सॉफ्टवेयर. सो ए जो 10 टा कंप्यूटर जदि मु कहबी ग्रिड कंप्यूटिंग रे ए 10 टा रु 8 टा मे भी हे पारे विंडोज आउ 2 टा हे पारे मे भी मैक ओएस, राइट, मैकबुक वाला से एप्पल वाला, राइट. देन एथिरे कोन हे जिवो ना ए माने हे गला हेटेरोजेनियस, करेक्ट? नो. इन केस ऑफ होमोजेनियस जो माने अछंती समस्त गोटी ही काम करिवे. जदि समस्त वीडियो एडिटिंग करछंती देन समस्त 10 टा रू 10 टा कंप्यूटर वीडियो एडिटिंग ही करिवे. बट एठी कोन हे पारे मे बी ये 10टा एठी 10टा एठी 10टा एठी 10टा का काम होची, एठी 10टा काम होची, लेट सपोज एठी 8टा काम होई परची, आउ 2टा कंप्यूटर फ्री रे बसछंती. दैट मींस आने काम करू नाहंती. दैट मींस काम करू नाहंती बोली ताको हमें कोथरे करबू? ग्रिड कंप्यूटिंग. इज दैट क्लियर? दैट मींस ताका पाखरे जो अनयूज्ड रिसोर्स अछि से माने आउ कोनोसी प्रोसेसिंग पाई भी यूटिलाइज कर परिबे. दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज ग्रिड कंप्यूटिंग. कंप्यूटर्स आर लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर, मींस मु जोटा कहली कि गोटे लोकेशन रे थिबे, then you will be cluster computing. But here in case of grid computing, computers may be located at huge distance from one another. So in a summary, you should understand cluster computing means many computers of same hardware and software presented in one location. Is that clear? Grid computing and in case of cluster computing, we are talking about many computers, same hardware plus software, same work, one location. Clear? 4 criteria for cluster computing. Grid computing, many computer, so same hardware, software, same work, same location. This is the definition of homogeneous. But I am saying many computer, it can be homogeneous or heterogeneous. In case of heterogeneous, what I can say it? Grid computing, right? And in case of heterogeneous, that means I am saying the computers, they might have different hardware and software. They may work on one task or may work in different tasks. They can be separated away from a huge distance. Is that clear? Cluster and grid computing. Okay, so this is what we call supercomputer. So in news you will heard about कि India got a supercomputer eta, America got a supercomputer. So you now understood how the supercomputer looks like. So if you see, this is like one CPU bhaliya dekhaଉଛି, right? This is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Let's suppose there are something around 15. So if you see 15 into 15 into 15, so many, right? Here. Now, can you tell me if I will say these are all having same hardware and same software? Can I say they are morely like cluster computing? Correct? These are cluster computing, right? Now, the same setup, this setup is in California, and same kind of setup I am putting in Bangalore. Here they are using, let's suppose, Windows operating system. Here I am using all Mac operating system, but same hardware, same software, all are having, let's suppose, here also 50 computers. Can I say these two are part of grid computing?
if they will try to do the same task but at distance away. Is that clear? Okay. So here, all the processing units are in the same location. They should have same software and hardware. Then we are calling it as cluster computing. Now, each processing unit, right? We are considering that as a node. So node one, or it can have many. This is one node. This is one node. So there are many nodes. So, but same hardware and software. Then we are calling it as what? Homogeneous, and they are present in only one location. This is what we call cluster computing. Is that clear? So India's fastest computer, that is what we call fastest supercomputers, Pratyus, India's fastest and fast multi-petaflops. Okay, we'll talk about what is peta, tera, and all. Okay, petaflops supercomputer to improve weather and climatic forecast. So now the first current affair that you should understand is India's fastest and fast multi-petaflops is Pratyus. Okay, this is one supercomputer. So with a theoretical peak performance of 1102 petaflops, that means flops means floating point. Okay, FLO, flow, P for floating point, operations per second, floating point operations per second. And how much? Now petaflops. So 1102 petaflops, floating point operations. Basically, what is floating point? Now the question is, what is floating point, right? So there are something called decimal point. You remember? Decimal 10.02. Okay. So similarly, there is a concept of floating point. Ki they will do operation 10 peta, means there are something like 10 to the 15 now. Okay. So 1102 10 to the 15 floating point operation per second. USS Frontier is the world's fastest supercomputer as of November 2022. So now the first current affair, against the current affair will be US ର supercomputer ନା କଣ ନା Frontier. Now ଏ ଯୋଉ Frontier as of November 2022, so these are not going to be static. Okay, the first thing is you should understand that those are not going to be static, because every country they will try to design supercomputer which may try to break the record. Correct? No. So by November 2022, which was the world's fastest supercomputer, USA Frontier. Then the most powerful supercomputer of India is Param Siddhi. Okay, it ranks 102 as of new list released in 2022. That means 2022 रे जोटे टॉप करूथला फ्रंटियर, हमर हेतले रैंक केते थिला 102, and US रो थिला फ्रंटियर, हमर कोन थिला परम सिद्धि. Clear? Okay. The supercomputer is a single system, that means cluster computing. Correct? Single system with more than 2,85,000 CPU. That means each CPU, can I say this is one node? Correct? So 285,000 nodes and 10,000 GPU. Okay, graphic processing unit. For example, gaming वगैरह ପାଇଁ हमको दरकार हुए. For example, high end task, video editing, gaming, जोथि ପାଇଁ हमको graphics दरकार. So सेति ପାଇଁ हमें कौन यूज करू ना GPU. Okay, so जो आमे जो सुपर कंप्यूटर कथा कहूचे, that is परम सिद्धि. The super computer is a single system, means cluster, गोटे cluster node जोटा कि गोटे एरिया रे थिबो, right? More than 285,000 cores. तमे कहथो ना 4 core, 8 core, octa core तमे सुनथिबो ना मोबाइल रे you use, right? Octa core, quad core. Similarly, here the CPU, it has 285,000 core CPU cores, okay, and 10,000 GPU. On top of that, each GPU server has 400 gigabits per second. Means they are the transmitting power is like they can transfer how much data? Now 400 gigabits data they can transfer per second of network connectivity. Anyway, graphics processing unit. This GPU is a specialized processor that can process many pieces of data simultaneously, making them useful for machine learning, video editing, gaming applications. So you just understand there is something called GPU which will be used for graphical image processing. तो graphics रे कौन होची से तो तमे कहू कि मो कंप्यूटर रे फॉर एग्जांपल जदि तम पाखरे ग्राफिक्स भलो नथिबो, लेट सपोज तमरो एमिति गोटा फोन अछि जो फोन रे भलो ग्राफिक्स नै, देन तमे जतले PUBG खेलियो ना, देन PUBG रो हाई एंड रिजोल्यूशन वाला गेम गोडा सपोर्ट करिवोनी, एंड जदि भी सपोर्ट कला सेथि लैगिंग होबो. काहे कि लैगिंग होबो? बिकॉज़ से जो गेम तारो जो फ्रीक्वेंसी जो हर्ट्ज रे फ्रीक्वेंसी जनरली हर्ट्ज रे मापो, राइट? सो तमे देखिथो ना 120 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज. करेक्ट? 60 हर्ट्ज माने गोटे
स्लो चलियो फॉर एग्जांपल आई रिमेंबर लाइक मो फोन जोटा अछि सेटा 140 हर्ट्ज रे काम करछि देन इफ यू ट्राई टू स्क्रॉल राइट लेट्स सपोज मते कांटेक्ट स्क्रॉल करियार अछि मु टिके स्क्रॉल करे लगभग 20-25 टा कांटेक्ट ऊपर को उठी जिवो बुझि परछ जदि तम फोन टा 60 हर्ट्ज रे काम करछि तमे जदि गोटे थरा फिंगर चलेबो स्क्रॉल करिया पे मे बी 5 टा कांटेक्ट ऊपर को उठियो यू अंडरस्टूड द हर्ट्ज राइट फ्रीक्वेंसी को फ्रीक्वेंसी रे से काम करछि दैट मींस जदि मु कहछि 20-25 टा कांटेक्ट नंबर ऊपर को उठि लेट्स सपोज मु जदि एम्ति कली राइट ये जितनी की फास्ट प्रोसेसिंग करूची जदि मे भी हेतांदा आर फ्रीक्वेंसी रेट जदि मु कहतां 10 से पूरा एमिति हेके आस्तांदा बुझियोछ ना बुझियोनी यू अंडरस्टूड राइट सी जदि लैग ही होनी तो लैग केतेले होबनी जदि तमरो फ्रीक्वेंसी ही अधिक थिबो दैट मींस ए फ्रीक्वेंसी अधिक होबा पे मते कोन दरकार एपटू एपटू का आसीबा ऑल द ई जो इमेज गुडा तमु देखाउची एगुडा सब गोटे गोटे पिक्सेल रे आसुथिबो एवरी पिक्सेल हैज सम मेमोरी हाँ कि नहीं दैट मींस सेही मेमोरी को प्रोसेस करिया पे गोटे सेकंड भितरे जे जेते अधिक प्रोसेसिंग करि परिबो सेते स्मूथ हाउ सेते फास्ट चलिबो बुझियोछ ना बुझियोनी दैट मींस जदि मते हाई एंड गेम खेलियर अछि एंड लैग करिवार नै फॉर एग्जांपल जना पड़ला गोटे गुली आसुची देन बाजिला वाला को 2 सेकंड लागुची देन तो तुम गेम रो मजा आसीबोनी सेति से माने कोन करथि हमको हाई एंड मोबाइल दरकार जोथरे जीपीयू थिबो जोथरे ग्राफिक्स कार्ड थिबो फॉर एग्जांपल कंप्यूटर रे जो माने गेमिंग करन गेमिंग खेलन गेमिंग कंप्यूटर रा अधिक पैसा पड़े काहे की बिकॉज़ एथरे ग्राफिक्स कार्ड थाए बिकॉज़ ग्राफिक्स न हले गेमिंग गोडा मजा ही लागिबोनी बहुत स्लो हो जाउतो से गोटे गुली मारतो या फिर ताकू भाबो गोटे खंडाटे चलाउतो देन खंडाटा जाई धीरे 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 जाउतो देन नो मजा लागिबोन ना right so that's why these are required what graphics processing unit anyway so GPU may be integrated into the computer CPU or offered as a discrete hardware unit so you can increase your GPU also like it may not be directly part of your like CPU जदि तुम दरकार 4 GB रो GPU अछि ग्राफिक्स कार्ड देन तुम कहू कि आउ 4 GB मु पके देबी ताकि processing ahuri fast hour right anyway so floating point operation per second a direct mathematical measurement of a computer's performance tera like 1 trillion peta quadrillion so 1000 trillion or 1 million billion okay so this is what we called petaflops means 1000 trillions so in case of trillion in case of 10 to the power what will be the power sorry in case of trillion what is billion 12. 10 to the 9 billion. 10 to the power 9 is considered to be billion. Yes, sir. Yes, sir. Okay. And for trillion, another 12. 3. Sir, 12. 10 to the 12, right? That means I am saying peta is nothing but 10 to the power 15. Correct? No. Yes, sir. Okay. That means I am saying in case of frontier, it is having 1102 into 10 to the power 15. It will try to do the operations. That much operation per second. Okay. So that is the speed. Next. Now, let's suppose we understood supercomputer. Means supercomputer, they have high speed. They can high speed in the sense they can do work in a lesser time. जोठी की वर्ष वर्ष लागिबा सेठी से माने किछि घंटा किछि सेकंड रे काम एक्सेस करते सो एप्लीकेशन कोन ना दिस सुपर कंप्यूटर आर डिजाइन्ड फॉर कैलकुलेशन इंटेंसिव टास्क high speed calculation such as problems involving like quantum mechanics. We'll try to understand what is quantum mechanics. Okay, this is the smallest unit of matter or energy, like photons are smallest. For example, we will talk about QLED. Okay, quantum LED जो टीवी आसुची देखियो ना टीवी आमे कहते कोन क्वांटम QLED टीवी हम गोटे दरकार सेतिर तमे देखियो कि ब्राइटनेस कलर रो जो कॉम्बिनेशन राइट से कलर गुडा बहुत क्लैरिटी दोथुओ फॉर एग्जांपल मते HD लाइक सुपर HD चलेयर अछि 4K चलेयर अछि बट कथा होची टीवी एमिति रखि गोटे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देन 4K चलेबो कि तमे हबनी ना बिकॉज़ से जो पिक्सेल दरकार से पिक्सेल पई सी एगुडा अगेन ई क्वांटम जेतले पडियो ना जेतले मु क्वांटम कहबी देन ताकू पुनी नानो टेक्नोलॉजी रे पडियो पडियो बिकॉज़ तमे कोन कहउछे स्मॉलेस्ट मींस नानो आडे तमे जाउछो तो जेते नानो टेक्नोलॉजी तमे पडियो कोन ना गोटे एलिमेंट ता एटम टाकू मु जदी से तार साइज को छोटो कर देबी ता प्रॉपर्टी बिहेवियर और प्रॉपर्टी चेंज हो जिवो ओके सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड सो बेसिकली यू अंडरस्टूड हियर इज क्वांटम कंप्यूटर्स जदी तमे बहुत छोटो छोटो जिंस कर देला फॉर एग्जांपल मते न तमे भाबो बाली तुमको गणियार अछि केतो समय लागियो बालीटा को गणिया पे गोटे मुठा बाली गणिबो आ गोटे मुठा पत्थर गणिबो लेट्स सपोज छोटो छोटो गोडी अछि कोटा को तमे जल्दी गणि परिबो पत्थरटा को राइट Yes, sir.
बट बाली गणी परिबनी दैट मींस मु कोन कहूची जते स्मॉल यूनिट हे जीवो छोटो छोटो जते भांगिया को जीवो सेते तुमको कष्ट हबो सेटा कंप्लीट करिया पे गणिया पे राइट सो ताहले तुमको कोन दरकार नॉर्मल कंप्यूटर से बाली को गणी परिबो ना पत्थर को गणी दबो पत्थर को इजीली गणी दबो करेक्ट नो किंतु हमको बाली गणियार अछि के गणिबो दैट मींस मते गोटे कंप्यूटर नु जदी 50 टा कंप्यूटर को मिसई देबी एंड से मानु कहबी कि भाई तमे गोटे काम कर जो तो बाली अछि ताको 50 भाग कर दिया एंड समस्त वर्तमान गोटे गोटे भाग गणिया स्टार्ट कर दियो ताहले ताका पई इजी हबो हां कि नै एंड मु कहूची 50 टा कंप्यूटर मिसई देली दैट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट सुपर कंप्यूटर यू अंडरस्टूड ओके वेदर फोरकास्टिंग बिकॉज हमको बहुत एक्यूरेट एंड बहुत फास्ट दरकार एमिति न कि जणा पड़ला कि गोटे कंप्यूटर को लगे वेदर फोरकास्टिंग करिया पई आसी कि साइक्लोन पीटी हे गलानी तथापि तार कैलकुलेशन सरी केते किलोमीटर स्पीड रे आसुची करेक्ट नो दैट मींस बहुत प्रिसाइजन एंड मिनिमम टाइम रे हमको दरकार कि वेदर टा कोन होची राइट सो वेदर फोरकास्टिंग पे हमें सुपर कंप्यूटर यूज कर परिबा क्लाइमेट रिसर्च पे सुपर कंप्यूटर बिकॉज एटी बहुत छोटो छोटो पार्टिकल यूज होय राइट जते जते छोटो छोटो आडू जिंस जीवो सेते तुमको दरकार सुपर कंप्यूटर साइमल्टेनियस ऑफ simulation of aeroplanes in wind tunnels, simulation of detonation of nuclear weapons and research into nuclear fission, molecular modeling, computing the structure and properties of chemical compounds, biological molecules, drugs, etc., modeling the spread of COVID-19 and predicting the pandemic peak using mathematical models. तो जो उठी तुमको लागिला कि this is very complex task काहा को असाइन करिवो सुपर कंप्यूटर क्लियर very complex tasks supercomputer supercomputers are designed and assembled in India that is called Center of Development for Advanced Computing CDAC जेतेबेले तुमको न्यूज रे आसीबो you understood that this is related to by something related to supercomputer they are trying to talk about they are designed and assembled in India by Center of Development for Advanced Computing CDAC next Pratyush and Mihir in 2018 India announced the release of India's fastest supercomputer as per January 2018 Pratyush an array of computer what is array means something like this okay stack hityo mane kono ethi gote computer CPU so this is 1 node 2 node 3 node 4 node 5 node so this is a kind of array okay तो array रे गोटे परे गोटे रहा है राइट सो दीज आर लाइक जो मु तुमको फोटो देखौथिल ना सो यू कैन कंसीडर दिस इज वन array this is second array this is third array एमिति माने array of computers होतली so this Pratyush is also something like array of computers that can deliver a peak power of 6.8 petaflops जोठी तमरो Frontier 1102 petaflops दउतिला एठी से केते दउची 6.8 petaflop is that clear okay along with another supercomputer called Mihir तो ए जो 6.8 फ्लॉप पेटाफ्लॉप्स दउची ये कहा सहित मिसी की दउची ना मिहिर बोली आउ गोटे सुपर कंप्यूटर सहित मिसी की से माने दउचंदी 6.8 पेटाफ्लॉप द मशीन्स आर इंस्टॉल्ड इन टू गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स that means two government institutes not in a same place right in two different places can I say this is grid computing okay so 4.0 petaflops which will be done by Pratyush facility at Indian Institute of Tropical Meteorology IITM Pune and 2.8 petaflops facilities at National Center for Medium Range Weather Forecast as Noida gote Pune re gote Noida gote Pune Maharashtra और gote Delhi pate that means grid computing clear so by 2018 we could able to get so basically Mihir is one kind of supercomputer and I can say here in Noida I will say if Mihir will do only one work then I will say it is cluster computing होंगी नहीं बट जदि मु कभी प्रत्युष एंड मिहिर दी जण मिसी की गोटे काम करिवे I will say grid computing fine okay so primarily be used for supporting research for improving weather and climate models the National Supercomputing Mission so National Supercomputing Mission NSM aims to enable various institutes across country with supercomputer infrastructure to aid research and development community for scientific and societal applications it was launched 2015 to enable India to leapfrog to the league of the world class computing power nations the mission is steered jointly by Department of Science and Technology DST and Department of Electronics and Information Technology DT and implemented by Center for Development and Advanced Computing that is CDAC and the Indian Institute of Science that is IISc
Bangalore. The CDAC is responsible to design, develop, deploy, and commission of supercomputers under the build approach of the mission. So now just think, no, if you try to understand, can you link this in case of GS3, GS2, GS1? See, GS3 directly, I'm not talking about from science perspective. I'm talking from the perspective of economics. I'm talking from the perspective of India internal security also. सी इकोनॉमी ପାଇଁ ବି ଆମକୁ ନ୍ୟାସନାଲ ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ମିଶନ ଦରକାର କାହିଁକି ନା ଯଦି ତମେ କହୁଛ ଆମକୁ ସୁପର ପାୱାର ହବାର ଅଛି दैट मींस ତମକୁ डिफेन्स रे भी बहुत भलो करियर अछि ना खाली डिफेन्स रे नुह तमको अलग देश को भी हेल्प करिवार अछि फॉर एग्जांपल जना पड़ला कि ऑस्ट्रेलिया रे गोटे साइक्लोन आसुची देन से साइक्लोन रिलेटेड जदी तमे प्रेडिक्ट करी कि तांको सूचना देई पारलो दैट मींस यू विल बी मोर ट्रस्टवर्दी करेक्ट नो जदी तमे से ट्रस्ट गेन करि पारलो अलग कंट्री टू देन से माने एक्सेप्ट करिवे तमरो सुप्रीमेसी अदरवाइज से माने करिवे ही नहीं बुझा पड़छ ना बुझा पड़ने जना पड़ला कि किछि गोटे तमे करिया चाहो देन तमको ही दरकार पड़छ अमेरिका रो डाटा कि भाई आम आड़े एपटे गोटे बंगोपसागर गोटे झड़ उठेलानी टिके आमको कुह केतले आसी पहुंचबो देन तमे केमिति कहबो कि मो सुपर लाइक सुप्रीम पावर हेबी बोली यू कैन नॉट से राइट सो इकोनॉमी पई जदी देखियो देन तमे तांगडू डाटा आनिबो तमर किछि गोटे जिंस दरकार तमे तांको कहबो से माने कहबे कि आमको किछि चार्ज दियो देन तमे पैसा पठाओ किंतु जदी तमे निजे रही गोटे डेवलप करबो फॉर दैट्स व्हाई इट्स अ मल्टी रोल्स राइट कि एमिति न कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी इट विल बी मोरली रिलेटेड टू इंटरनल सिक्योरिटी इट विल सो व्हेनेवर आई एम टॉकिंग अबाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी यू शुड ऑलवेज कनेक्ट एवरी टेक्नोलॉजी टू इंटरनल सिक्योरिटी because every technology which will have a separate security aspect also okay then economical aspects also and obviously there has to be social aspect जति भी टेक्नोलॉजी तुम यूज करछो काहे कि यूज करछो सोशल स्फीयर रे जो वर्क गोडा अछि ताकू मिनिमाइज एंड लग्जरी प्रोवाइड करिया पे हां कि नहीं जो प्रॉब्लम गोडा अछि ताकू तुम ट्राई करछो सोसाइटी रो प्रॉब्लम गोडा को साइंटिफिकली सॉल्व करिया पे चाहे से मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट हो डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट हो राइट डिजिटल इंडिया रे तमे चाहो समस्त को डिजिटली कनेक्ट करिया पे काहे कि फॉर एग्जांपल यू टॉक अबाउट से जो डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर टॉक अबाउट यूपीआई all are related to solving some social issues right financial inclusion हाँ कि नहीं okay so it was launched in 2015 to enable India for leapfrog to league of world class computing power nations the mission we already talked about this is related to Department of Science Technology Department of Electronics and Information Technology under whom CDAC and IISc Bangalore the mission plans to build and deploy 24 facilities with cumulative compute power of more than 64 petaflops जोठी सेठी हमें कहउतिले आकु रेफरेंस रे रखि था फ्रंटियर 1102 petaflops बट एठी हमें केते टारगेट करूचे 64 petaflops बट टिल नाउ सीडाक हैज डिप्लॉयड 11 सिस्टम एठी 24 टा फैसिलिटीज को हमें ट्राई करूचे एठी हमें केतेटा मात्र करि परछि सीडा 11 टा of various institute in India estimated cost 4500 crore mission duration 7 years the mission envisages empowering a national academic and research and development institutions in the country by installing a vast supercomputing grid comprising of more than 73 indigenous supercomputers. Now you should not have any doubt what is grid and cluster. Correct no? कि तमे जो कहू कि हमें various कोन सुपर कंप्यूटर आडू कनेक्ट करिकी गोटे 64 पेटाफ्लॉप्स ता माने जदी मते गोटे 1000 पेटाफ्लॉप्स दरकार मु ताको क्लस्टर कंप्यूटिंग रे अचीव करि परिबी की मो बारे बहुत जगह दरकार गोटे जगह बहुत सारा कंप्यूटर थिवा दरकार हां कि नहीं बट जदी मु कहबी ग्रिड रे कनेक्ट करिकी 1000 पेटाफ्लॉप्स अचीव करिया पे हां करि परिबी किंतु कथा होची 1000 पेटाफ्लॉप्स एप्लीकेबल केतेले हबो जदी बर्तमान माने कहउछन 64 टा पई हमको 24 टा फैसिलिटी दरकार मीन 24 टा लोकेशन बर्तमान सीडैक डेवलप करिछ मात्र केतेटा 11 टा दैट टू 64 टा पई जदी मु कहबी 1000 पई ता माने मते 24 टा जगह में भी दरकार मते 100 प्लस बुझियो ना बुझियोनी ओके सो MOUs have been signed with 14 premier institutions of India for establishing supercomputing infrastructure with assembly and manufacturing in India including IITs NITs and national labs and IGERs progress in December 2018 the government awarded French technology from Atos the contract to build over 70 supercomputers. First phase is completed. Second phase was expected to be completed by September 2021 and third phase has begun. Supercomputing infrastructure has already been installed in more than 10 premier institutions.
national supercomputer missions. First supercomputer named Param Sivaya. Param Sivaya. So our first was something related to Pratyus, correct? No, supercomputer. Then we talked about Param Siddhi. जेतेବେଳେ ଆମେ frontier ସହିତ କଥା ହଉଥିଲେ Param Siddhi. But in national supercomputer mission, NSM under रे first supercomputer ना कौन? Param Sivaya. Clear? It has been installed in which area? IIT BHU. It has 837 teraflops, not peta. This is tera. High performance computing. The second supercomputer, Param Shakti, 1.66 petaflop. If you talk about Pratyus, Pratyus has 4, Mihir has 2.8 petaflops. But in case of second supercomputer, because we are targeting 64, right? Out of 64 petaflops, we are targeting for how many locations? 24 locations, correct? No. But in case of NSM रो जो फास्ट सुपर कंप्यूटर हला ता ना होची परम शिवाय जहार के होची 837 teraflops, but Param Shakti 1.66 petaflops. It has been installed in IIT Kharagpur. The third system, Param Brahma. So Shiva, Shakti, Brahma. Third is Param Brahma, 797 teraflops, not even peta. It has been installed in IISER Pune. So one is in BHU, one is in IIT Kharagpur, one is in IISER. But if you see in all three, which is in PETA, that is IIT Kharagpur. Param Yukti. So we understood the first one is related to Param Shiva, second Param Shakti, correct? No. Third is Param Brahma. Param Yukti, it is 838 teraflops. It is a computer at Jawaharlal Nehru Center of Advanced Scientific Research, Bangalore, and 650 teraflops supercomputer at IIT Hyderabad. So there is Param Yukti. Param Sanganak, right? It is in IIT Kanpur, 1.3 petaflops. Param Siddhi, a high performance computing artificial intelligence supercomputer has been created and installed in CDAC, fastest in India as of now by 2020, ranked 63 in top 500 in 2020 with a peak speed of 5.267 petaflops and 4.6 petaflops sustained speed. That means it achieved 5.267, but sustaining means सबु बेले केते petaflops रे काम करि पारुची ना 4.6 minimum रे तो से काम करूची. That means if by 2020, what is the super fastest computer of India? Param Siddhi. Is that clear? Because Pratyush, if you see, it is 4 petaflops, right? But Param Siddhi 5.267 or 4.6 petaflops sustaining. Recently, Param Prabhega 3.33 petaflops supercomputer installed in January 2022 at IISc Bangalore. It is the largest in any Indian academic institution. Academic institution is Prabhega. Otherwise, highest till now, Param Siddhi. Then Param Ganga 1.66 petaflop, IIT Roorkee. Param Ananta, that is in IIT Gandhinagar, 833 teraflops. So as of now, 15 supercomputers has been installed across the nation with aggregate computing capacity of 24 petaflops. तो ए पर्यंत सी आमे टार्गेट केते करूजे एनएसएम अनुसार 64 पेटाफ्लॉप्स केतेटा सेंटर रे 24 टा सेंटर रे बट ए पर्यंत केतेटा सेंटर बनि पारिछि 15 टा सुपर कंप्यूटर सेंटर बनि पारिछि करेक्ट नो एंड अचीव केते हेछि 24 दैट मींस हमको आहुरी केते दरकार ना 40 पेटाफ्लॉप्स बट सेगुडा डेवलप होबार अछि क्लियर. The next generation indigenous high performance computing interconnect called Trinetra. It is not supercomputer but wireless LAN. What we are saying, high performance computing through Trinetra has been designed and developed by CDAC for efficient inter-node communication between computer nodes within a cluster. गोटे क्लस्टर भितरे जो तक हमर लेट सपोज एठी हमर 100 टा नोड अछि नोड माने 100 टा कंप्यूटर तो तांको भितरे जो कनेक्टिविटी से कनेक्टिविटी को हमें इंटरनेट थ्रू रे अचीव करिया गले ताको हमें ना कोन कहूचे त्रिनेत्र. इज दैट क्लियर? India's first indigenous server platform called Rudra. India's first indigenous server platform Rudra is also initiated a wide spectrum of sector including high performance computing system, hyperscale data centers, edge computing, banking and commerce, oil, gas industry and healthcare can benefit from the indigenously built server. Server is a computer or system that provides resource data services or program to other computers known as clients or over a network. Okay, let me tell you. So let's suppose this is one area जोठी की बहुत सारा कंप्यूटर रखा है. देन एक कंप्यूटर ओडा को
जोठी आमे होस्ट करूचे यार डाटा गुडा जोठी आमे होस्ट करूचे ताको आमे बेसिकली गोटे सर्वर कहूचे server is a computer system that provides resources data services or program to other computers known as client or over a network for example मु कहूची बर्तन लेट सपोज मु सिस्को रे काम करूची देन जनरली कोन होय गोटे VPN थाए जोथरे कि हमें सिस्को रो सर्वर सहित कनेक्ट हो फॉर एग्जांपल किछि रिसोर्स अछि जो लेट सपोज मु गोटे प्रोजेक्ट रे काम करूची राइट तो से प्रोजेक्ट रो जो तक डाटा मे बी से माने किछि टीबी रे यूज करछन डाटा some 1000 TB data required for that project data required in the sense what basically customer manakara data is let's suppose the project which I am working on let's suppose there are some 1000 customer those customer they are doing what they are trying to upload the data forget about this let's suppose I am giving you a simple example everyone use Amazon right Amazon or Flipkart any e-commerce site so what you do let's suppose you are trying to log in कला पारे तापरे तमे कहउछ कि बर्तन सेल चलती देन सेल रे मु बहुत सारा जिंस खोजिया को तो बर्तन तमे जो जिंस ओडा खोजुछ बेसिकली यू आर ट्राइंग टू जनरेट डाटा करेक्ट नो तो तम थॉट प्रोसेस को नै कि से थॉट प्रोसेस इज नथिंग बट इट इज कन्वर्टिंग टू ए डाटा ओनली फॉर एग्जांपल मते एना मोबाइल ओडे खोजियार माने मोबाइल ओडे किनियार अछि देन दैट इज माय थॉट प्रोसेस व्हेन आई एम ट्राइंग टू एंटर दैट थॉट as a word in the Amazon website that thought became a word and that word became a data you understood right बर्तन कथा होची एमिति केते डाटा जाय कि स्टोर होची ए जो स्टोर होची एगुडा कोठी जाय कि स्टोर हो ना Amazon रो सर्वर रे देन सेही सर्वर रे तो गोटे कंप्यूटर नथिबो काई ना गोटे कंप्यूटर रो लिमिट अछि हार्डवेयर तमे केते लगेबो करेक्ट नो तो से माने देयर विल बी अ क्लस्टर ऑफ कंप्यूटर्स व्हिच विल बी प्रोवाइडिंग द डाटा नाउ ऑल द डाटा बेसिकली ताको हमें कोन कहउछे डाटा सेंटर और वी यूज्ड टू कंसीडर दैट एज ए सर्वर तो से सर्वर रे सम 1000 ऑफ जीबी और 1000 ऑफ टीबीज थिबो ठीक अछि से डाटा जाय कि स्टोर होची काली जेतले तमे तम मोबाइल रू या तम कंप्यूटर रे ट्राई करूछ कि किछि गोटे जिंस खोलिया पई सेतले गोटे रिकमेंडेशन पळे आसी हां कि नै कि भाई तमे आईफोन देखुतलो लेट सपोज 14 15 टा भी सस्ता रे पडुची ए जो रिकमेंडेशन ता तमु 15 रो आसीला कोठु आसीला तमे जो डाटा देइथिलो से डाटा ऊपर प्रोसेसिंग हैला दैट मींस से डाटा ऊपर प्रोसेसिंग कोठी हैला सर्वर रे बुझियला ना बुझियलानी बट से डाटा आसीला कोठी की तम कंप्यूटर को दैट मींस तम कंप्यूटर को जो डाटा जे प्रोवाइड कला से किए ना गोटे सर्वर दैट मींस दिस सर्वर इज ए कंप्यूटर और ए सिस्टम लेट सपोज Amazon नो सर्वर जोटा कि लेट सपोज कैलिफोर्निया रे अछि इट प्रोवाइड्स व्हाट रिसोर्सेस और डाटा और सर्विसेज और प्रोग्राम्स टू अदर कंप्यूटर्स लाइक तम मोबाइल फोन नोन एज क्लाइंट ओवर ए नेटवर्क सो तमे कनेक्टेड अछो इंटरनेट रे तो जेतले तमे कनेक्ट अछो इंटरनेट रे जेतले तमे amazon.com खोलुछो देन it will be go to Amazon server जोटा कि कैलिफोर्निया रे अछि तमे सर्च कलो आईफोन देन से डाटा से ठू पठेला आईफोन एंड तमे चेक कलो डाटा पाइलो तो डाटा रिसोर्सेस आर सेंट थ्रू द internet from the server to the client surface basically client computer is that clear so India रो इंडिजिनियस सर्वर प्लेटफॉर्म कोन ना रुद्र so basically रुद्र कोन करिवो ना डाटा प्रोसेसिंग करैबो डाटा पई से रहइबो ओके बट जदी ए पर्यंत हमें जहा देखिले परम सिद्धि देखिले करेक्ट दैट इज द फर्स्ट we talked about Pratyush initially Pratyush थिला जोटा कि 4 petaflops थिला but later on परम सिद्धि which developed which became 5.27 and normally 4.6 petaflops रे से काम करू इंडिया रो मैक्सिमम केते थिला ना 4 plus 2.8 6.8 petaflops हमें अचीव करथिले but that is a combination of two Pratyush and Mihir that means a grid computing so any doubt between cluster computing and grid computing fine so we covered रेडियो फ्रीक्वेंसी वाला जिंस ब्लूटूथ कवर कले वाईफाई कवर कले लाइफाई कवर कले एंड सुपर कंप्यूटर कवर कले एंड नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन भी कवर कले नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन रे हमें कहले कि 64 पेटाफ्लॉप्स हमको दरकार बिकॉज़ भाई फ्रंटियर रो तमे देखियो 1102 पेटाफ्लॉप्स करेक्ट नो तो हमको सेति की पेटाफ्लॉप्स अचीव करियर अछि जदि हमको सुपर पावर बनियार अछि जदि मु कहबी कि लाइक नॉट एक्जेक्टली सुपर पावर पई केवल सेटा ही दरकार बट एटलीस्ट तमे कंपेयर करो कि जदि तमे चाहो कि मते सुपर पावर बनिवार अछि देन तम पाखरे सुपर कंप्यूटर अछि कि तो जना पड़ला कि सुपर कंप्यूटर ही नहीं बट आमे स्वप्न देखु कि हां हमको भी सुपर पावर बनियार अछि देन तमे टारगेट करू कि एनएसए मंडल रे 64 पेटाफ्लॉप्स एटलीस्ट यू आर ट्राइंग टू डू ए टारगेट आफ्टर 2015